तो मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ. लेट मी शेयर दिस. ओके, सो हमने कल किया था टेंजेंट प्लेन के बारे में. हमने डिफाइन किया टेंजेंट प्लेन, at a point on a given surface. और हमने क्या किया, just a minute, let me check. Okay, this is basically what we did. तो अगर मेरे पास कोई surface है, basically surface patch है, so suppose in my R3, मैंने कहा था मैं इसकी drawing हमेशा ऐसे बनाऊंगा. So this is my x-axis, this is y, and this is z-axis. Part of a surface inside this three-dimensional space. So I define tangent plane at point this. A plane that just touches this point P, and if this is the point R, right, then this tangent plane can be, its equation can be written as this R minus R dot product with RU cross RB. This thing is equal to 0. This would be the equation of our tangent plane at point R, and here this capital R can be written as, this capital R represents any point, on this plane, the general point, the generic point on this plane. Okay, then we also define this equation of this normal, which is rather obvious. This line perpendicular to the point at P. Actually, it is perpendicular to the tangent plane at the point P, and its equation was R is equal to small r plus lambda times RU cross RB. I think itna हमने किया था. Now इसके बाद, if we use Cartesian equation, suppose our function is given in the Cartesian form, in an implicit form. जैसा कि हमने कहा था, you can always write a surface also in this form. Some function of x, y, z identically is equal to 0. In that case, the equation of the tangent plane would be, we take this generic point on R to be capital X, capital Y, capital Z to get the Cartesian form of the tangent plane, and this small r as having Cartesian points of small x, small y, and small z. So in that case, our equation of the tangent plane would become, what was that? It was like this: x minus x, the small x, into partial of this with respect to x, plus y minus this small y, into partial of f with respect to y, plus this capital Z minus the small z, and capital of f, partial of f with respect to z, this is equal to 0. And of course, equation of the normal would be x minus x divided by del f by del x, because these are the direction ratios of this normal. Y minus small y del f by del y is equal to z minus z divided by del f by del z. And of course, मतलब ये है अपनी Cartesian form of this equation, the tangent plane, and this is the Cartesian form of our normal line. Now, of course, whenever we evaluate it, x, y, z होगा, it would depend upon r. We are evaluating it at a certain point, so we just need to x, small x, small y, small z होगा, it would have certain values, say 1, 2, 3. And similarly, we are going to evaluate these partial derivatives at that point. तो ये numbers होंगे हमेशा, और मेरा variable जो होगा इस plane या इस normal का, वो होगा capital X, capital Y, and capital Z. Okay. Then we also defined. Now we know that जो हमारा tangent plane है, wherever it is, मेरे पास एक surface है. चलो अगर मैं यहाँ फिर से बनाता हूँ. This is a patch, a part of my surface. Then I have a plane here. So
that touches it at this point, and हमें पता है इसके जो span it's generated by RU and RV. RU and RV वो vectors है, हर कोई point on this plane is some combination of R sub U and R sub V. That means partial of the equation of the surface primary R as R at U V. Then I take the partial of R with respect to U and partial of R with respect to V. These are two vectors which generate my tangent plane. Okay, then of course जो ये होगा cross product of RU cross RV, it is perpendicular to both RU and RV. Therefore, it would be perpendicular to the whole tangent plane. ये जो ये vector है, this would be RU cross RV. यानी ये जो मैंने यहाँ ये vector which is perpendicular to the whole tangent plane, RU cross RV. So then we define N, this capital N, to be RU cross RV divided by its magnitude. Oh, this is an important quantity for our surface. तो इसके magnitude से मैंने divide किया. So ये होगा, now of course इसकी direction वही होगी जो RU cross RV की है. So it would be a vector in the same direction, लेकिन इसका magnitude होगा norm of N would be equal to 1. So we call this vector N to be surface normal. Yeah, normal to the surface. Normal, yeah, unit normal to the surface. To the surface at given points. Given point means जहां पर मैं ये partial derivatives evaluate करूंगा. So तो ये अपना unit normal होगा. Furthermore, तो we denote this quantity by h. जो small h है, it is this quantity, the magnitude of RU cross RV, magnitude of this normal to the surface. So in that case, I can say once we use these symbols, then I can say that RU cross RV is equal to the h times the unit normal to the surface. Now I can write it this way, provided I denote h by the length of this RU cross RV. Okay, accordingly, now what we do a small result, a small theorem, and that says that for a regular surface, अगर हर किसी point पे no regular surface, ये जो units normal है, चलो पहले मैं लिखता हूँ statement, then let me come to it. Now, if I have a proper reparameterization, I know that I can reparameterize a curve. I can change my parameters from UV to some other parameters U prime, V prime. जो कि हमने कुछ surfaces में किया भी था. तो अब इस reparameterization को कहा कि ये ऐसी होनी चाहिए, आपने उसको कहा proper reparameterization such that Jacobian of this transformation is non-zero. तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या तो वो नॉर्मल्स को ऐसे का ऐसे ही छोड़ती है, या फिर उसकी डायरेक्शन हर जगह फ्लिप कर देती है. लेट मी राइट इट डाउन इन वर्ड्स. द प्रॉपर पैरामीटराइजेशन या reparameterization of the surface leaves either leaves every normal, yani normal at every point, either leaves every normal unchanged or reverses its direction. या तो हर कोई नॉर्मल सेम रहेगी या सबकी डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी under a proper reparameterization.
यानी ऐसी पैरामीटराइजेशन जिसका जैकोबियन नॉन जीरो। तो प्रूफ इसका बहुत ही इजी है। तो हम कहेंगे लेट, जैसा कि हमने पहले किया था, लेट r is equal to r at uv be the equation of the surface be the equation of the surface and let the relations u prime equal to phi of uv and v prime equal to psi of uv give a proper parametric transformation, give a proper parametric transformation so once I've done that, let me write it down. Let's call this 1. Okay, then I know that now I can think of R. The parameterization का मतलब ये है कि I can now think of this surface also in terms of new parameters. R at u prime, v prime, where u prime, v prime are nothing but some functions of uv. तो इस तरह से क्योंकि हमने लिखा under equation 1. Now if that is the case, so I can use my chain rule जो कि हमने last time किया था. Then del r by del u is equal to del r by del u prime into del u prime by del u plus del r by del v prime into del v prime by del u. Similarly, del r by del v is equal to del r by del u prime into del u prime by del v plus del r by del v prime by del. So this is just chain rule. ये हमने इस पहले भी एक बार यूज किया था इसी तरह से, बिल्कुल हम वही करेंगे. That is, इसको अगर मैं अपने नोटेशन में लिखूं, r sub u is equal to r sub u prime into del u prime, मैंने क्या लिखा था, del u prime by del u, of course, plus r sub v prime into del v prime by del u, and similarly r sub v is equal to r sub u prime into del u prime by del v plus r sub v prime into del v prime by del v. Right. Okay. So that gives us, if I take the cross product, last time हमने किया था, ru cross rv is equal to, हमें डायरेक्ट अगर वो लिखूं तो वो होगा ऐसे, del u prime by del u, तुम चाहे तो वहां से देख सकते हो, into del v prime by del v minus del u prime by del v into del u prime by del u. This whole thing multiplied by ru sub ru prime cross rv prime. Okay, so that gives me, इसको अगर मैं लिखूं, h times the unit normal n is equal to, now this is the Jacobian, as you know, this जिसको हम लिखते हैं del u prime v prime in short by del uv into, now this would be nothing but the surface normal with respect to new parameters and this h prime. Of course वहां हम कह सकते हैं n prime जो है वो है ru prime cross rv prime divided by the length ru prime cross rv prime, and of course h जो है it is nothing but ru prime cross rv prime. थोड़ा सा इसको नोटेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, now what we do, let's call this equation second.
Now, since the reparameterization 1 is proper, reparameterization 1 यानी इक्वेशन 1 जो की जो reparameterization है is proper, इसका मतलब ये नॉन जीरो हो, यानी ये जो अपना है del u prime v prime the Jacobian, and this is not equal to 0. Okay, then so and now also ये जो h and h prime है they are positive, right? Positive for a regular point, of course. Regular point. पहले तो ये कि इट्स लेंथ, सो ये तो नॉन नेगेटिव ही होगी हमेशा, और जीरो ये तभी होगी जब अंदर का वेक्टर जीरो होगा, और वो जीरो नहीं होगा फॉर अ रेगुलर पॉइंट. द सरफेस इज रेगुलर, देन ऑफ कोर्स दिस h and h पॉजिटिव और बोथ नॉन नेगेटिव. तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी नॉन जीरो है ना, और ये भी पॉजिटिव है. तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये है कि ये कहता है हमें कि n एंड n प्राइम होंगे, मतलब या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. नाउ द क्वेश्चन इज, ये भी हो सकता है ना कि कभी ये एक ही डायरेक्शन में हो, कभी रिवर्स डायरेक्शन में हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं या तो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर सारे के सारे उल्टी डायरेक्शन में होंगे, यानी या तो n ऐसे होगा हर पॉइंट के लिए, n ऐसे और n प्राइम ऐसे, या फिर सारे के सारे पॉइंट्स के लिए n भी इसी डायरेक्शन में होगा और n प्राइम भी इसी डायरेक्शन में होगा. That's what we want to prove. ये नहीं कि कुछ पॉइंट्स के लिए इस तरह से हो और कुछ पॉइंट्स के लिए इस तरह से. तो वो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? Now we are going to use this. Now, thus if j is positive, यानी अगर ये जैकोबियन पॉजिटिव है, जीरो तो नहीं हो सकता, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब n और n प्राइम की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर ये नेगेटिव है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये जो बाकी वाला फैक्टर बचा है जैकोबियन जो कि नॉन जीरो है, अगर ये पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन होगी, अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी. thus if j is positive, j का मतलब है मेरा जैकोबियन, यानी del u prime v prime by del uv, अगर ये पॉजिटिव है किसी जगह, then m and n prime are in the same direction, and if j is negative, n and n prime are in opposite direction. Of course magnitude तो इनका सेम ही है. अब हम यूज ये करेंगे कि j कभी जीरो होता नहीं, और ये जैकोबियन जो है ये हमेशा होता है, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन. नाउ सिंस j is Jacobian is a continuous function, it can be checked easily because it's a determinant of these continuous function. So it's basically a continuous function of uv. So therefore, and since j is positive, yeah, j is non-zero, so therefore either j is positive for all uv in the domain, or j is negative for all uv in the domain. देखो अब जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर वो पॉजिटिव किसी वैल्यू पे है, दूसरे वैल्यू पे नेगेटिव है, तो किसी वैल्यू पे जीरो भी होनी चाहिए, बिकॉज कंटिन्यूअस फंक्शन कैन नॉट जंप फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यूज टू नेगेटिव वैल्यूज. अब क्योंकि ये नॉन जीरो है और कंटिन्यूअस है, या तो हर जगह ये पॉजिटिव होगी या हर जगह नेगेटिव होगी, which means that therefore either n and n dash are in the same direction,
at all points of on the surface, our surface patch, or they are in opposite directions. Opposite directions at all points of the surface. तो ये इससे ये साबित हुआ, बेसिकली इससे ये भी साबित हुआ, ये जो मतलब यू कैन नॉट हैव, अचानक से फ्लिप नहीं हो सकता किसी जगह ना ये सरफेस पैच पे हमारा जो नॉर्मल है. तो essentially it also means that regular surfaces means it must be one-sided. So वो हम कहीं और पे करेंगे बात, orientability of the surface पे. So now इसके बाद हम अगर चाहे तो एक आध एग्जाम्पल कर सकते हैं. जैसे अगर मैं लूँ अपना R at UV, मतलब ये एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं. If I take my surface to be R at UV given by let's take the paraboloid UV plus U square V square. So ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं to find the equation of the tangent plane. Equation यहाँ लिखते हैं find, या इसको काम लिखते हैं, नहीं सीधे कहते हैं find the equation of the tangent plane at a point, let's call it 1 minus 1 2, क्योंकि अगर u and v 1 और -1 है तो z कोऑर्डिनेट फिर होगा u स्क्वायर. इस पॉइंट पे इस पैराबोलॉइड जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, अगर मैं x y z लेता हूँ अपने इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, इस तरह पैराबोलॉइड सरफेस. इट गोज ऑफ कोर्स इंफिनिटी तक. तो ये जो एक कप जैसी सरफेस है उल्टा इन्वर्टेड, तो इस पे हमें टेंजेंट प्लेन, अगर मैं देखूं 1 -1 बन जाएगा और ये फिर -1 जाएगा और फिर 2 जाएगा, मतलब कहीं इधर अप्रोक्सीमेटली ये जो यहाँ पे इसका एक टेंजेंट प्लेन बनेगा. इस प्लेन की इक्वेशन हमें ढूंढनी होगी. तो इट्स वेरी इजी. कैसे करना है, वी नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन. सॉल्यूशन अगर हम करना चाहें, we know what's equation of a tangent plane. It is capital R minus small r dotted with r sub u cross r sub b is equal to 0. Right? So let's do it. Now r sub u किसके बराबर होगा? चलो पहले r लेते हैं. Now r is equal to u v u square plus v square. So r sub u means taking the partial derivatives. It will be 1 0, then I have 2u because you have to treat v as a constant. So r sub v hoga of course 0 1 2v, and of course you can take now the cross product. Now ru cross rv बराबर होगा, तो ये होगा of course यहाँ पे मैं रखूंगा फिर 0, so it's minus 2u, then j would be minus 2v, and of course k coordinate of 1. So this is our ru cross rup. Now at u equal to 1 or v equal to -1, तो ये हमें पॉइंट चाहिए ना. सो ru cross rv बन जाएगा हमारा जो नॉर्मल प्लेन है. ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा जो हम ढूंढना चाहते हैं. u को अगर 1 देंगे तो -2, देन v को अगर -1 देंगे तो ये 2 बन जाएगा. ऑफ कोर्स इसमें तो फर्क नहीं पड़ता. सिमिलरली r किसके बराबर होगा? r would be equal to, हमारा पॉइंट है 1 -1 2. So hence the equation of the tangent plane
would be r minus this small r dot product with this cross product is equal to 0. तो ये मिल जाएगा हमें, that is r minus मेरा वेक्टर क्या है 1 minus 1 2 right dot product with minus 2 2 comma 1 is equal to 0. Now this is the equation of the tangent plane in vector form. तो अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना चाहें तो वो भी बहुत इजी है. So in Cartesian form, if we take now to find the Cartesian form of the equation will be taking by ऐसे नहीं लिखते. Cartesian form of the equation will be given, चलो ऐसे लिखते हैं, by taking this vector r to be capital X, capital Y, capital Z, so that we get capital X, capital Y, capital Z minus क्या था अपना 1 minus 1 2 1 minus 1 2 dot product with minus 2 2 1 minus 2 2 1 is equal to 0. Of course हम इसको कर सकते हैं, so that will be x minus 1 y plus 1 z minus 2 dot product with minus 2 2 1 equal to 0, which would give us minus 2 into x minus 1 plus 2 into y plus 1 plus 1 into z minus 2 is equal to 0. That will give us minus 2x plus 2y minus plus z plus 2 plus 2 minus 2 is equal to 0. That would be x to x minus 2y minus z. Then I have minus 2 is equal to 0. So that will be the Cartesian form of the tangent plane, which is clearly the equation of the plane. और अगर हम normal निकालना चाहें, so that will be again r is equal to तुम कर सकते हो at the same point plus lambda times r cross r भी, जो तुम खुद भी कर सकते हो. Do it yourself. वो तुम चाहे तो एक और कर सकते हो. Tangent find exercise एक और हम कर सकते हैं, मतलब we can find the tangent plane, find the tangent plane of the surface x y z. Okay, x into y into z is equal to 4 at the point, what do I have, 1 2 2. तो इसको थोड़ा तुम पहले पैरामीटराइज करोगे. पैरामीटराइज कैसे करोगे, तुम लोग ये सपोज x को u ले लो, y को v ले लो, then z must be 4 divided by uv. यानी इसकी पैरामीटराइजेशन हो सकती है r is equal to r at uv, uv 4 by u. ठीक है, तो तुम आगे चल के इसका टेंजेंट प्लेन निकाल सकते हो at any point, इसका surface normal निकाल सकते हो. So I leave it to you, ये uv multiplication है ना. या फिर तुम डायरेक्ट इसको ले सकते हो कार्टेशियन फॉर्म, तब तुम्हें f x y z जो बन जाएगी वो होगी x y z minus 4 is equal to 0. तो जो मैंने बताया था कार्टेशियन इक्वेशन के लिए, अगर तुम इस तरह से कन्वर्ट करोगे तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x minus x into del f by del x plus y minus y into del f by del y. नहीं बताता हूँ कैसे तुम कर सकते हो, दोनों ही तरीकों से करना, that's good. मतलब हमें क्या करना, z minus small z, और ये जो small x y z है वो ही है तुम्हारा पॉइंट, this is x y z into del f by del z. और तुम्हें ये जो पार्शियल्स हैं वो भी मतलब at this point evaluate करना है, and this would be equation of the tangent plane
और नॉर्मल वे मैं पहले ही कर चुका हूँ, मतलब कह चुका हूँ कि कैसे करना है, तो so let's leave it as an home assignment. हाँ, इसी तरह से तुम इस सरफेस के लिए भी कर सकते हो. Let me write it down. Z is equal to xy. पॉइंट तुम लोगे at 2, 3, 6. यूजिंग द सेम थिंग, चाहे ये वाली इक्वेशन यूज करो, चाहे इसको पहले पैरामीटराइज करो. इसका तो बड़ा इजी हो सकता है पैरामीटराइजेशन, UV मतलब पैरामीटराइजेशन है. फिर चाहे तो इस तरह से करो वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में. ओके, नाउ हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. अभी हमने टेंजेंट प्लेन किया और ये सब किया. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी कॉल द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अ सरफेस ऑफ द मेट्रिक. First fundamental form और जिसको हम कहते हैं metric of a surface. Now first fundamental form, if you remember what's a quadratic form, पहले तो ये कि मतलब what is this ना metric, क्या हमें क्या मतलब है metric से, what do we mean by metric? Metric हमें देता है in this case, in the case of differential geometry, ये जो छोटा सा टुकड़ा है लेंथ का, मतलब अगर छोटा सा टुकड़ा हम लेंथ का लेंगे, जैसे प्लेन में अगर हम लें, राइट, तो इसकी जो सपोज इसकी एक साइड अगर है लेंथ dx, दूसरा साइड है लेंथ dy, तो ये जो I can break it in two parts like this, and then using the Pythagoras theorem, तो मेरा जो ये होगा इसका length of that, the very tiny little length on a plane would be given by this formula, dz square by Pythagoras theorem is equal to dx square plus dy square. ये जो length होगी, I should write it ds, ठीक है. ये जो small length होगी, dx square should, this is my formula for the length, or this small length जो है, it is square root of small changes in x coordinate plus small change in y coordinate squared, of course. So the question is, अगर मेरे पास general surface है, right, अब मैं यहाँ पे एक tiny segment, बहुत ही छोटा tiny segment लेता हूँ, तो इसके लिए क्या formula हो सकता है, given that I have equation of a surface. So that's what is given by first fundamental form. That's why we call it a metric. It gives us the formula for finding the infinitely small, very tiny little length on a given surface. So let's first define it. Now let R is equal to RUV be the equation equation of the surface, then the quadratic differential form. Quadratic means each term, so quadratic differential form. इसमें differentials का form है, यहाँ variable dx dy du dv जैसे कि हमारे पास है वैसे होंगे. E du square plus twice f du dv plus g dv square. Of course इसमें जो variable है वो है du dv in du dv, and where ये जो e है ये बराबर है r sub u dot r sub u, यानी partial differentiation हमने लिया इस इक्वेशन का with respect to u and v, तो उससे हम EFG evaluate करते हैं. F is ru dot rv, और since our surface is at least of class 2, it can also be written as rp cross ru, and जो g है वो है dot product of rv dot r. तो once मतलब यहाँ ये substitute करूँगा तो ये जो ये expression है which is a quadratic form, right, means इसकी जो variables हैं उनका सबका हर एक term का power 2 है, overall power. By that I mean इसका square है, यहाँ 1 1 है लेकिन 2 है तो power 2 है.
तो एक तरह से it's a homogeneous thing, homogeneous of degree 2. So that's what would be a quadratic form. Okay, और ये जो quantities है, the quantities, हाँ अभी मैंने लिखा is called the first fundamental form, or the metric of the given surface EFG ये जो है are called the first order fundamental magnitudes, because there is a second fundamental form also, first order fundamental magnitudes of the surface, magnitudes और first order fundamental coefficients वो भी कहते हैं. बेसिकली क्या है कि हम ये दिखाएंगे कि ये जो टाइनी लेंथ होगी, मतलब इसको मेट्रिक इसलिए कहते हैं, ये जो टाइनी लेंथ होगी ऑन एनी सरफेस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर. So that is basically why it's called a metric. तो चलो हम लिखते हैं geometric interpretation of the metric. मतलब वही हम प्रूव करने वाले हैं कि इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये है. Geometric interpretation of the metric. Now we consider a curve on the surface. We consider a curve. Curve कैसे लिखी जाती है surface पे? U is equal to some, U depends upon some parameter and V also depends upon the same parameter. क्योंकि हमारे variable U and V है. On a surface, अब चूंकि surface पे है, R is equal to R at U. So what we do, हम लेते हैं हमने एक कर्व ली सरफेस पे, और मान लो इसका कोई, of course it lives inside x y z, right? इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है ना. इसका कोई, अगर मैं इसको ओरिजिन के साथ जोड़ दूं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसका अगर हम नाम दे r, और इसका जो दूसरा एंड पॉइंट है, of course उसका भी कोई है ना. ये अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं इस तरह से, तो मैं इसको ओरिजिन के साथ जोड़ता हूँ. ये वेक्टर अगर मैं कहूँ आर यू, तो इसको मैं कहूँगा इस वेक्टर को जो इसके दूसरे एंड पॉइंट के साथ है, जो मेरी लेंथ है, जो मेरी कर्व है, नेबरिंग पॉइंट्स में बिल्कुल क्लोज वाले दो पॉइंट्स, ये उसका मैग्निफिकेशन है एक तरह से. तो इस पॉइंट को मैं आर कहूंगा, इसको कहूंगा आर प्लस सम वी आर, थोड़ा इससे आगे वाला वेक्टर जिसमें हमने थोड़ा सा पैरामीटर को बढ़ा दिया है. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, लेट आर and r plus dr be the position vectors of two neighboring vectors and two neighboring points on the surface. मतलब neighboring मतलब बिल्कुल close, because I am talking about a very tiny infinitesimal length on the surface. So vectors of two neighboring points, let's call them P and Q. Let this point be P. मैं इसको बड़ा करके लिख रहा हूँ, और यहाँ अगर मैं सरफेस पे हूँ तो ये इधर है. मैंने यहाँ इसका थोड़ा ये मैग्नीफाई करके बताने की कोशिश की. P and Q इसका अगर हम नाम रखें, with corresponding parameter values, of course यहाँ because it's an equation, तो ये इस point की corresponding कोई parameter होगा अपने parameter plane में, और इसका भी कोई होगा. Let's call that u plus du, v plus dv. यानी मेरे कहने का मतलब है r is equal to r at u v. ये जो r plus dr है, it is basically r at u plus du
v plus d. Now we have just changed the parameters by a bit. Obviously, we are at another point with corresponding parameter values uv and u plus du, v plus d. Okay, now if I want to find actually the tangent vector, or rather, the differential, the small length, then dr, the complete derivative, जैसा तुमने किया होगा multivariate calculus में, it would be equal to the differential होगा बराबर del r by del u into du, because the function we are considering is differentiable, del r by del v into dv, or it would be r sub u du plus r sub v dv. And if I want to find the length, the infinite small length, देखो मेरे पास नेबरिंग पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है, मतलब वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ये r है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर है r प्लस dr. अगर मैं इन दोनों को जोड़ने वाला ये वेक्टर दूं, तो यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर होगा सिंपली dr, यानी r प्लस dr इज r प्लस dr. सो ये जो मेरा pq वेक्टर होगा, now let the arc pq, मान लीजिए जो pq की जो arc है ये है ds, let the arc pq be ds, इसका नाम मैंने ds रखा. Now since the points are very very close, हम बिल्कुल infinitely small हो जाता, मैंने इसको मैग्नीफाई किया, लेकिन जब ये बहुत स्मॉल होंगे तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं रहेगा. दैट्स द आइडिया ऑफ अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग. यानी जो और छोटा अगर मैं करूंगा तो ये, तो जितना ही छोटा होता जाएगा और पॉइंट्स क्लोज होते जाएंगे, तो ये जो ds और dr की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए. सिंस द पॉइंट्स, वही मैं लिख रहा हूँ, सिंस द पॉइंट्स p and q are neighboring points, therefore ये जो मेरा ds है, it would be nothing but the length of the vector dr. तो इसका मतलब ds स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा dr का स्क्वायर, लेकिन हमें पता है लेंथ का स्क्वायर होता है वेक्टर क्या, डॉट प्रोडक्ट विद itself. And of course I can just substitute the value of dr, and this is nothing but r sub u du plus r sub v d, dot product with itself, yani it is dotted with r sub u du plus r sub v dv. So that is, अगर मैं इसका dot product लूं, dot product distributes our vector addition, it should be ru dot ru du square plus ru dot rv, अगर तुम उसको multiplication करोगे, it would be basically twice du dv plus rv dot rv into dv square. I am using here, मैंने यहाँ use ये किया कि ru dot rv is the same as rv dot rv, because dot product comments, बस उतना ही मैंने किया. So this is what we get, यानी मुझे जो ds square मिला, it is basically ru dot ru into du square plus ru dot rv twice into du dv plus rv dot rv r sub v dot rv dv square. और अगर तुम याद करो तो हमने e जो है, e was defined to be ru dot ru, f was defined to be ru dot rv
and G was defined to be RV dot RV. This is nothing but E du square plus twice F du dV plus G dV square. So it's nothing but the the first fundamental form. So which is nothing but the first fundamental form. और ds क्या है? छोटी सी लेंथ जो infinitely close points है, PQ, infinite small points on the surface, उनके दरमियान जो length का square है, it is exactly the first fundamental form of the surface. That's why we call it a metric. Metric means which measures the distance. First fundamental form of the surface. चलो इसको हम यहीं पर अपने कल इससे आगे करेंगे. Okay, stop share. Okay, CR.